Dear students, this is Debashis Saha as a social teacher, Oriental Public School, Kishanganj. Today I teach you class 5 subject social chapter 7. Today my topic is the land of sand, सऊदी अरेबिया. चलिए बच्चे आज हम लोग द लैंड ऑफ सैंड और सऊदी अरेबिया के बारे में क्लास में डिस्कस करते हैं. पढ़ाई को जारी रखते हुए आगे बढ़ते. कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं. इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव studied about an extremely cold and regions. Now let us now about a very hot regions. A deserts, any regions devoid of water and vegetation is referred to as the desert. A desert may be have come formed due to the clearing of the forest cover, erosions of fertile top soil is the continually deficient rainfall. The deserts are found there, the tropics, and generally in the western regions of the continents. The maps show the deserts found around the globe. We will study about the Arabian desert in this chapter. चलिए बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे. कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे. पढ़ाई को जारी रखते थोड़ा सा हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं. अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक से लोकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे. सऊदी अरेबिया इज द पार्ट ऑफ द अरेबियन Peninsula located in Southwest Asia. It is the largest peninsula in the world, having the Red Sea in the west, Persian Gulf in the east, and Arabian Sea in the south. Some of the neighboring countries of the Saudi Arabia are Kuwait, Iraq, Jordan in the north, Qatar, Bahrain, United Arab Emirates, UAE in the east, and Oman and Yemen in the south. Major port of the country is the rocky plateau covered by a vast desert. This country is a wide stretches of sandy desert having a permanent lakes or river. बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे. कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे. आज हम लोग क्लास 5 सब्जेक्ट सोशल चैप्टर 7 द लैंड ऑफ सऊदी अरेबिया के सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में डिस्कस किया, उसको लोकेशन के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ. पढ़ाई को जाए तो आगे की ओर थोड़ा सा बढ़ते हैं. Rub of Khali, empathic waters, and the Nafutes are the continuous bodies of sandy hills called sand dunes. These sand dunes move from one place to another due to the strong winds. अभी पढ़ाई को जाए आगे बढ़ते हैं. मेरा नेक्स्ट टॉपिक है क्लाइमेट. क्लाइमेट को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे? जलवायु. ड्यू टू द लैक ऑफ द रेनफॉल सऊदी अरेबिया हैज़ ए वेरी हॉट क्लाइमेट. वहाँ के मौसम बहुत ही ज़्यादा गर्मी है. समर आर accompanied with the high temperature in the daytime and cooler nights. In the winter they are warm and nights are chilling. Sandstorms are quite and frequent in these regions. गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, रात में मौसम ठंडा हो जाता है और ठंड के मौसम में उतना ही ठंड ये हो पड़ते हैं. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाई को जाए तो थोड़ा आगे की बढ़ते. फ्लोरा एंड फौना. Plants adapted the arid conditions are the only ones of the survive here. Cacti, date palm, and the thorny bushes are some plants which grow in these regions. They have the well-developed root system to reach out for water and under the soil surface. Leaves are modified into the spines to prevent loss of water. At some places, the underground water comes up to the surface due to which the vegetation is possible in that area. This is called and the oasis. Several crops like the date palm, rice, vegetables, wheat, and the barley can be grown and be here and there. And the permanent human settlement are also found in such places. Animals which live in these regions are rats, lizards, spiders, snakes, etc., which protects themselves from the extreme heat by living in burrow. चलिए बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे. आज हम लोग क्लास 5 सब्जेक्ट सोशल चैप्टर 7 द लैंड ऑफ सऊदी अरेबिया के इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में मैंने आप लोग डिस्कस किया. लोकेशन के बारे में टॉपिक्स पर डिस्कस किया. क्लाइमेट्स के बारे में, फ्लोरा एंड फौना. अब हम लोग डिस्कस करेंगे सऊदी अरेबिया के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैसा है, आर्थिक गतिविधियाँ. सऊदी अरेबिया इज द वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम. एक्सपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम ऑल्सो कॉल्ड लिक्विड गोल्ड इज़ ए ग्रेट सोर्सेस ऑफ इनकम फॉर द कंट्री. वहाँ के लोगों का पेट्रोलियम से बहुत ज़्यादा इनकम होते थे. अदर इंडस्ट्री हैव ऑल्सो established water availability for irrigations and other purposes is the dependent on the distillation of the water. बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखें. कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस पढ़ाई को जाए तो थोड़ा सा हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं. लाइफ इन दिस रीजन. सऊदी अरेबिया के लोगों को ज़िंदगी के जीने का तरीका किस तरह उसके बारे में डिस्कस करेंगे. पीपल ऑफ सऊदी अरेबिया इज आइदर लिव इन द टाउन्स और इन द विलेजेस. टाउन्स dweller have the modern facility and work of officials, traders, and the businessmen. Development of petrochemicals, petroleum
refining, fertilizers, iron, cement, and the construction industry has enabled the country to establish trade with the different parts of the world. We can find the several established schools and colleges in this country. वहाँ पर बहुत तरह के स्कूल एजुकेशनल सिस्टम बहुत ही अच्छे थे सऊदी अरेबिया के, तो स्कूल बहुत तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ स्कूल्स कॉलेजेस इन दिस कंट्री में, उस देश में थे. पीपल इन विलेजेस लीड द सिंपल लाइफ, वहाँ के जो गांव में लोग रहते तो साधारण ज़िंदगी जीते थे. फ्लॉक्स ऑफ शिप्स एंड गॉड्स एंड कैमल्स, उन लोग sheep, goats, camel चढ़ाते थे. They are nomadic people who do not possess permanent houses and move from one place to another. One such tribe is Bedouins. Saudi Arabia is known as the birthplace of Islam. बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखें, कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करें. पढ़ाई को जाए तो आगे क्यों. सऊदी अरेबिया इज़ नॉन एज द बर्थ प्लेस ऑफ इस्लाम. इस्लाम इज़ द मेजर रिलीजन एंड अरबिक the official language of spoken here. Bedouins are recognized by their nomadic lifestyle, special language, the social structure and cultures. They live in the camel and goat here tents trading and the livestock and the huntings. They feed on the camel milk and make cloths from the camel. And near the oasis during the summer, and this the row of the camels called caravans. They exchange animals and goats for food and water. Over the years, there has been gradual change in this lifestyle of the Bedouins, or they have started living in these cities. बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखें, कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे. पढ़ाई को जारी रखते थोड़ा सा हम लोग आगे की बढ़ते हैं. वहाँ के लोग किस तरह के ड्रेस पहनावा पहनते थे उसके बारे में चलिए डिस्कस करते हैं. सऊदी मेंस वेयर द लॉन्ग लूज कॉटन रोब्स कॉल्ड थ्रॉप. They protected them the head from the sun and dust by the head and covering called the guthar. Women wear the long robes called the abaya and cover their faces with veils. वहाँ की सरकार गवर्नमेंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. सऊदी अरेबिया इज द मोनार्ची विच मीन्स दैट द किंग इन द हेड ऑफ द कंट्री. सऊदी अरेबिया में किसकी ये था, मोनार्ची के, ठीक है. विच मीन्स द किंग ऑफ द हेड ऑफ द कंट्री. लैंग्वेज एंड रिलीजन्स, इस्लाम इज द मेन रिलीजन्स. Arabic is the common language. Most of the city people are speak English. Islam is the main religion. Arabic is common language, and most of the city people also speak in important city. Saudi Arabia important city. Saudi Arabia has several old and new cities. Cities have a modern facilities, good transport system, buildings and offices. Riyadh is the capital of the city as well as the most populous city of the kingdom of Saudi Arabia. Saudi Arabia has several and old cities and they have the moderate facility, good transport system, building and offices. Riyadh is the capital of the city and the most populous city is the kingdom of Saudi Arabia. Is the universities, colleges, specialized industry, culture and center, stadium and the public libraries. Jeddah is another important city which ports in the western coast along the Red Sea. It is the one of the busiest port in this region. Makkah is the main center of pilgrims for the Muslims. It is the desires of the every Muslim to visit this holy city only this their lifetime in this associate with the founder of the Islam's Prophet Muhammad's Medina is another religious center of the pilgrims. बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, कोई कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करें. पढ़ाई को जारी रखते थोड़ा आगे की ओर. कैमल इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एनिमल फॉर ट्रांसपोर्टेशन. सिटीज हैव ऑल मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. रेल ट्रांसपोर्ट इज द नॉट वेल एस्टैब्लिश, वहाँ का रेल ट्रांसपोर्ट उतना अच्छे नहीं थे ड्यू टू द सैंडीज ट्रेन. सऊदी अरेबिया इज वेल कनेक्टेड ऑफ different parts of the world by air and sea routes. Some important topics is this chapter. Saudi Arabia lies in the Arabian Peninsula and the large part of this desert. Extreme heat and aridity are the characteristics of most of Saudi Arabia. Many people in Saudi Arabia live in nomadic life. The economy of Saudi Arabia is the petroleum based. It is the world leading petroleum export today. Cultivation of wheat, barley and the dame palms and found near the oasis. Riyadh and the Jeddah is among the important cities of the Saudi Arabia. Camel is an important means of transport in the hot regions. बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे. आज हम लोग क्लास 5 सब्जेक्ट सोशल चैप्टर 7 द स्नो प्लान इन सऊदी अरेबिया के बारे में सबसे पहले आप लोगों के सामने डिस्कस. सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में आप लोग को बताया. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक से मेरा था लोकेशंस के बारे में डिस्कस किया. उसके बाद हम लोग डिस्कस किए कि यहाँ के क्लाइमेट किस तरह का है, यहाँ फ्लोरा फोना किस तरह का है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है, लाइफ इन दिस रीजन, यहाँ के लोगों का ज़िंदगी कैसे ये बिताते. बेडुइन्स के बारे में डिस्कस किया.
यहाँ के लोग किस तरह का ड्रेस पहनावा पहनते हैं, गवर्नमेंट्स यहाँ की सरकार किस तरह का है, लैंग्वेज एंड रिलीजन्स किस तरह के, इंपॉर्टेंट सिटीज़ क्या क्या है, ट्रांसपोर्ट। एक चीज़ और ध्यान से बच्चे सुनेंगे इस टॉपिक में। यहाँ देखिए, सऊदी अरेबिया इज़ द पार्ट ऑफ द अरेबियन peninsula located in southwest Asia, is the largest peninsula in the world, having the Red Sea in the west, Persian Gulf in the west, and Arabian Sea in the south. Some of the neighboring countries in the Saudi Arabia, some important line: Kuwait, Iraq, Jordan in the north, Qatar, Bahrain, United States Emirates, and the east, and the Oman and Yemen in the south. Major part of the country is rocky and plateau covered by a vast deserts. This country is a wide stretches of sandy deserts having no permanent lakes or rivers. We have Al Khal emphatic quarters and Nafute are the continuous bodies of sandy hills and called the sand dunes. बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखें, कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करें। और एक चीज़ इसमें बताएं, यहाँ के लोग की इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक गतिविधि। सऊदी अरेबिया इज द वर्ल्ड लीडिंग ऑफ द प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम, एक्सपोर्ट ऑफ द पेट्रोलियम ऑल्सो कॉल्ड द लिक्विड गोल्ड इज a great source of income for the country. Other industries have also been established. Water availability for irrigation and other purposes is the dependent on the resilience of the sea water. बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग चैप्टर 7 क्लास 5 सब्जेक्ट सोशल एंड लैंड ऑफ सऊदी अरेबिया के बारे में डिस्कस, इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में बताया, लोकेशंस के बारे में, यहाँ उसके बाद यहाँ के क्लाइमेट्स के बारे में, फ्लोरा एंड फौना के बारे में, इकोनॉमिक एक्टिविटी आर्थिक गतिविधियाँ, लाइफ इन द रीजन्स के बारे में, बेडुइन्स के बारे में डिस्कस किया। ड्रेसेस, यहाँ के लोग किस तरह के ड्रेसेस पहनते हैं उसके बारे में, गवर्नमेंट यहाँ किस तरह की सरकार है। यहाँ पर सऊदी अरेबिया इज़ द मोनार्ची, वहाँ पर राजा का शासन, विच मीन्स दैट किंग इज़ द हेड ऑफ द कंट्री। लैंग्वेज, इस्लाम इज़ द मेन रिलीजन्स, अरबिक इज़ द कॉमन लैंग्वेज, मोस्ट ऑफ द सिटी पीपल आर स्पीक इंग्लिश। इंपॉर्टेंट सिटी सऊदी क्या क्या, सऊदी अरेबिया इज सेवरल ओल्ड एंड न्यू cities have the modern facility, good transport system, buildings and offers. Riyadh is the capital of city as well, the most populous city of the kingdoms of Saudi Arabia. It is a universal colleges, universities, colleges, specialist industry, cultural centers, stadiums and public libraries. Jeddah is the another important city with port on the western coast and along the sea red coast. It is one of the busiest ports in the regions. Makkah is the main center of pilgrimage for the Muslims. It is the desire of every Muslims to visit this holy city once in their lifetime. It is associated with the founder of Islam, Prophet Muhammad. Medina is another religious center of pilgrims. Transport, यहाँ के transport camel is the most commonly used to the animal for transportation. Cities have all the modern means of transportation. Rail transport is well and established due to sandy trail and the Saudi Arabia is well done connected to different parts of the world by air and sea routes. Some important of in Saudi Arabia is lying near Arabian Peninsula and large part of it is desert. Extreme heat and aridity are the characteristics of the Saudi Arabia. Many people in Saudi Arabia is live in nomadic. The economy of Saudi Arabia is petroleum based. It is the world leading petroleum exporter today. Cultivation of the wheat, barley and date plants are found in near oases. Riyadh and Jeddah are the among important cities of Saudi Arabia. Camel is an important means of transport in hot desert region. बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखें, कहीं कोई दिक्कत हो जाएगा हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करें। स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।